Hello students, welcome to Science Surfers. Today we are going to start the topic sound part 2. In this part we are going to discuss about different characteristics of sound, audible and inaudible sound, differences between noise and music, noise pollution, its causes, effects and prevention. We have already discussed that साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी. साउंड का बेसिक कॉज वाइब्रेशन है. और वाइब्रेशन क्या है? इट इज द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जब भी एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है तो वो अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन करती है. ओके, सपोज वी प्लक अ स्ट्रेच रबर बैंड that vibrates and produce sound. Similarly, by beating a drum, that membrane vibrates and produce sound. If we blow a bugle, the air column vibrates and produce sound. So something is vibrating to produce sound. जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो अपनी मेन पोजीशन से कुछ आगे और पीछे टू एंड फ्रो मूव करती है. ओके, suppose we have the object at position O. Okay, so when it start vibrating, it moves to its position B, then it will come back to its position O, and without stopping there it moves to position A, then again come back to O. That means it continuously moves around its mean position from O to A to O, then O to B, and again back to O. Okay, similarly while stretching rubber band, that rubber band also shows the same type of motion. From its mean position it moves to other extreme positions. Okay, एक ऑब्जेक्ट जब अपनी mean position से extreme, एक बार extreme position पर, दोबारा mean पे, फिर दोबारा extreme और mean position पर वापस आएगी, then it will complete its one वाइब्रेशन. जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन O एंड A या O टू B, जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको बोलते हैं उसकी एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्टेंस covered by an oscillating or vibrating body from its mean position to its extreme positions. और डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट है मीटर. ओके, सिमिलरली वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं और टाइम पीरियड ऑफ दैट वाइब्रेशन. ओके, देन हाउ मेनी ऑसिलेशंस आर कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड. एक सेकेंड में वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट कितनी नंबर्स ऑफ वाइब्रेशंस को कंप्लीट करती है उसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हमारी हर्ट्स. फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कवर्ड इन 1 सेकेंड. ओके, सो दीज आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. Loudness and pitch of the sound are determined by these characteristics of the vibration. हमारा साउंड लाउड होगा, उसकी पिच कैसी होगी वो डिपेंड करता है साउंड के इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स पर. ओके, पहले हम बात करते हैं लाउडनेस की. तो लाउडनेस किसी भी साउंड की डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, यानी ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा अपना डिस्टेंस कवर करेगी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशंस तक, साउंड उतना ही लाउडर होगा. ओके, और इफ द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल the sound will be fainter or feeble. Okay, unit of loudness जो है वो होती है decibel. Sometimes we use bell. Okay, then we have another property of sound, that is pitch. The pitch of the sound depends upon the frequency of vibrations. Sound shriller होगा या flatter होगा, जो main difference between females और males की voice में है. ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी. फीमेल्स की वॉइस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, सो दैट इज मोर श्रिलर. ओके, एंड मेल्स हैव गॉट फ्लैटर साउंड बिकॉज द frequency of vibration of the vocal cords is less in males. Okay, so therefore
वी हैव द फ्रीक्वेंसी, जितनी उसकी लो होगी उतनी ही पिच भी उसकी लो होगी. ओके, साउंड ऑफ अ ड्रम और साउंड ऑफ एन एडल्ट वो लो पिच के साउंड हैं. सिमिलरली साउंड ऑफ whistle, साउंड ऑफ बेबी, दे आर हाई पिच्ड साउंड, मीन्स दे हैव हाई frequency. Human beings cannot hear the sound of all the frequencies. Human beings की सुनने की एक रेंज है. Human beings can hear only the frequencies between 20 Hz to 20,000 Hz. और इसके 20 हर्ट्ज से जो नीचे के या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के जो साउंड है ह्यूमन बींग्स कैन नॉट हियर. ओके, सो ऑडिबल साउंड जो है वो सिर्फ विद इन फ्रीक्वेंसी रेंज में ही होंगे, तो ह्यूमन बींग कैन हियर देम. और बाकी सारे हमारे इनऑडिबल साउंड होते हैं. ओके, जिन साउंड की फ्रीक्वेंसीज 20,000 हर्ट्ज से अबव होती है उनको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स. Whereas sounds of frequency less than 20 Hz are called infrasonic sounds. और human beings इन दोनों sounds को नहीं सुन सकते, but some animals like dogs, they have the special ability to hear these sounds. They can hear the ultrasonic sounds. Or the bats, they also produce and hear the ultrasound or ultrasonic sounds. Okay, now what is the difference between noise and music? देखो हमारे आसपास जितना भी साउंड प्रोड्यूस होता है सब साउंड हमारे लिए सुनने में प्लेजेंट नहीं होते. ओके, सम साउंड आर अनप्लेजेंट बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय इरेगुलर वाइब्रेशंस. जब कोई बॉडी इरेगुलरली वाइब्रेट करती है, अब एक बीटिंग ऑफ ड्रम है, अगर हम उसको रेगुलर वाइब्रेशंस और ढंग से बजाएंगे देन इट इज़ प्लेजेंट टू हियर दैट बीटिंग ऑफ ड्रम. बट अगर हम जस्ट उस पर वैसे ही कंटिन्यूसली जस्ट बीट करते जा रहे हैं तो वो हमारे लिए एक इरिटेटिंग साउंड या नॉइज बनता है. ओके, तो अनप्लेजेंट साउंड्स which irritates the ears is known as noise, and noise is produced by irregular vibrations, right? Like noise created by the horns of buses, vehicles, truck, etc. It is unpleasant to hear. Whereas certain sounds like sound produced by musical instruments and sound of a chirping bird like nightingale, okay, that is melodious. It is प्लीजिंग टू हियर, हमारे ईयर्स के लिए प्लीजिंग होता है, हमें सुनने में अच्छा लगता है, एंड दैट इज नोन एज म्यूजिक. ओके, एंड द म्यूजिक इज प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर वाइब्रेशंस. तो जो साउंड रेगुलर वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होगा और कानों को सुनने में भी अच्छा लगेगा, दैट विल बी कॉल्ड म्यूजिकल साउंड और सिंपली म्यूजिक. Whereas the sound which is unpleasant to hear and produced by irregular vibrations is known as noise. And the addition of this unwanted sound in the environment is known as noise pollution. Okay, and noise pollution के main causes क्या हैं? ये unwanted noise आता कहाँ से है? Okay, it comes by sound of vehicles, bursting of crackers, different machines, loudspeakers, etc. हमारे घरों में भी बहुत से ऐसे डिवाइसेस और गैजेट्स हैं which produce lot of sound like radio, TV, music system, these coolers, mixer, juicer, etc. So these are producing irregular vibrations called noise. Okay, and they are the main causes of noise pollution. So what is the effect of noise pollution on the health? Noise pollution has many harmful effects on the health. सबसे पहला इफेक्ट होता है lack of concentration. Okay, lack of sleep, hypertension, high blood pressure, anxiety, person feel irritated, चिड़चिड़ापन जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है. Sometime very loud noise can cause temporary or permanent impairment of hearing, loss of hearing. Okay, पूरी तरह से ही सुनना बंद हो सकता है because of very loud noise. और हम इसको लिमिट कैसे कर सकते हैं? How can we limit or how can we prevent the noise pollution?
just by using silencers in vehicles, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस. तो हमें वो अप्लायंसेस यूज़ करने हैं जहाँ पर साइलेंसर्स लगे हों एंड दे प्रोड्यूस वेरी लेस नॉइस और साउंड. देन वी शुड ऑलवेज रिड्यूस द यूज़ ऑफ व्हीकल हॉर्न्स. हमें जहाँ ज़रूरी हो वहीं बजाना चाहिए, अदरवाइज unnecessary honking of horns is not recommended. Okay, running TV, radio, music system should be always at low volumes. इनको high volume पे नहीं चलाना है हमें. Then planting of trees. All type of pollutions have one very important solution, that is planting of trees. So planting of trees along the roads and buildings may help to absorb sound. Okay, and reduces noise pollution.